Hello guys, this is Prakash sir again. Yesterday in part 1, Maths 1, chapter number 1, we have seen that how to solve the two simultaneous equation by determinant method, that is by Cramer's rule. So today in part 2, we are going to continue the same exercise. Two sums will be solved by me and I will be completing the exercise 1.3. So let us continue the exercise 1.3, solving the two equations by Cramer's rule. Going to continue exercise 1.1, how to solve the simultaneous equation by Cramer's rule. So question number 3, sub question 3, question is x plus 2y is equal to minus 1, 2x minus 3y is equal to 12. The first basic step, I told you students yesterday in part 1 that the equation should be of the form x plus or minus y is equal to number. So this satisfies this equation also, x plus or minus y equal to number. So this equation also satisfies the given condition. So I am writing this equation above and then this equation below. So x plus 2y is equal to minus 1, equation 1, and let us take this equation 2, 2x minus 3y is equal to 12, that is equation number 2. D, then dx, and then dy. To find the determinant d, we are going to take the determinant of, we have to hide the constant. We have to hide the constant. Suppose I am hiding this. So determinant d means you have to take the determinant of 1, 2, 2 and minus 3. d के लिए आपको numbers hide, x के coefficients और y के coefficients आपको this determinant में लिखने हैं. So now I am going to write the coefficient of x is 1. Nothing is written means here it is 1. So 1 and then 2, and then here minus 3. And yesterday I have told you how to solve this. 1 into minus 3 in first bracket. Subtraction is very important. Minus करना ही है. Then in another second bracket, 2 into 2. And then solving further, 3 ones are 3, plus minus is minus. मल्टीप्लिकेशन रूल है यहाँ पर. दिस माइनस एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है. 2 2 इज़ 4. देन वी सी दैट माइनस माइनस अभी प्लस करेंगे तो 4 plus 3 is 7. देन पुट इट ऑन द बिगर नंबर. 4 हैज़ अ माइनस साइन, तो पुट इट माइनस. सो द वैल्यू ऑफ d इज़ minus 7. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, determinant of x. So to find the determinant of x, we have to hide the x part. x part मैंने अभी hide किया है. And then I am going to write whatever I am seeing here. I can see here 2, minus 3, minus 1 and 12. In case of dx, I have to write it ulta. So first I am going to write minus 1, 12 and then 2 and minus 3. In the dx case, we have to do like this always. So please student, please make a note that I can see here 2 and minus 3, minus 1 and 12, but I will write it first minus 12 and minus 1 and 12 and then 2 and minus 3. Detail part I am not going to explain. So now I am going to write minus 1, 12 and then 2 and minus 3. x part में आपको ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है. बाकी किसी में आपको ऐसा उल्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ गोइंग टू सॉल्व सेम वे जस्ट एज वी फाइंड d, determinant d. सो इन फर्स्ट ब्रैकेट देयर विल बी 2 ब्रैकेट सेपरेटेड बाय माइनस साइन. ये माइनस आपको आना ही चाहिए. फर्स्ट ब्रैकेट में minus 1 into 3, सेकेंड ब्रैकेट में 12 into 2. We can see minus plus minus, 3 ones are 3. There is no sign, so minus sign will come. 12 twos are 24. Sorry guys, you can see that I have not written this minus sign here.
So -1 12 and 2 -3, 2 -3. So -1 into -3. So this minus sign will come here. Minus sign, minus becomes plus. So +3 and -24. +3 and -24 we can see. Plus minus करेंगे तो माइनस करेंगे तो 24 minus 3 will be 21 and put it on a bigger number, that is -21. So we got the value of dx as -21. Now we are going to find the determinant dy. To find the determinant of y, we have to take y को हमें अभी छुपाना है. तो we see that 1 2 and -1 and 12. 1 2 and -1 and 12 ये ऐसे ही लिखेंगे. पहले वाला पहले लिखेंगे, 1/2 पहले लिखेंगे और -1/12 बाद में लिखेंगे. हमने x में उल्टा किया था. x में हमने x को छुपाया था और ये पहले लिखा था, ये बाद में लिखा था. पर y और d में हम ऐसे नहीं करेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ y. सो आई एम गोइंग टू हाइड दिस. So suppose I am hiding this y part, so I can see 1 2 and then -1 and 12, -1 and 12. So now two brackets will come, in between there is a minus sign. In first bracket 1 12s are 1 into 12, second bracket 2 into -1, 2 into -1, 1 12s are it's 12, minus sign as it is. 2 into -1 is -1. Then this neighboring sign, I call it as neighboring sign. जहाँ भी होगा उसको पहले आपको सॉल्व करना है और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल होगा. तो सॉल्विंग द साइंस, neighboring sign, minus becomes plus, this 1 as it is and this 12 as it is. सपोज यहाँ पर -12 होता तो भी हम -12 ही लिखते. पहले हम इसे सॉल्व करते. माइनस प्लस, एज यू कैन सी हियर, माइनस इज प्लस. So now 12 plus 1, sorry, you see that 2 ones are 2. So 12 plus 2 comes to 14. So little bit mistakes I am doing, no problem, but I can see I am doing the mistakes and I am concentrating and I am rectifying it also. So now your dy is 14. So now we have to find the value of x and y, and you know that this method is the Cramer's rule method. So now I have to write here by Cramer's rule, x is equal to determinant of x upon d, and dx value is, we can see here, -21, and the d value is -7 and dy value is 14. So I am writing here dx value, that is -21 upon d. So d value is -7. So if I subtract this, minus gets cancelled and 7 1s are 7 3s are 21. So my answer is 3. So x is equal to 3. And then to find the value of y, the formula is dy upon d. So dy is 14 upon d is -7. So minus sign we have to take it up. Then we have to cancel it. 7 1s are 7, 7 2s are 14. So it will be -2. So now the value of x is 3 and the value of y is -2. This is our answer part. So in this way, by Cramer's rule, we find the value of x and y of the given simultaneous equation. X plus 2y is equal to -1 and 2x minus 3y is equal to 12. The basic step is that it should be of the form x plus or minus y is equal to number. It is satisfying the condition, and this equation is also satisfying the same condition. So no need to arrange, only we have to write it one upon the another. In D case we can write the coefficient of x and y without
changing the places, that means 1/2 and 2/-3 same, but in value the we see determinant x में हम क्या कर रहे हैं, x को छुपा रहे हैं और 2 और -3 और -1 और 12 के जगह पे पहले हम -1 एंड 12 पहले लिखेंगे और 2 एंड -3 बाद में लिखेंगे। तो गाइस दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो आपको यही स्टेप मिस्टेक नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो गए, आई डू फील सॉरी फॉर दैट, बट आई रेक्टिफाइड इट। मैं ऑन द स्पॉट ये सम्स कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो सकता है, बट आई फाउंड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। So continuing further, I'm going to solve the last sum of this exercise, practice set 1.3. I think so these three sums are enough to practice the other sums and to continue with your studies. So solving the last sum of this exercise, practice set 1.3. So this so you can see that this question is in the form x plus y or minus y is equal to number. So no need to arrange this, but you see this question is somewhat different. It has a denominator. So denominator y has a denominator 2 and this 1 is also having denominator 2. So 2 is common. So I am multiplying this by 2. So I am multiplying this the whole equation by 2. So suppose if I write multiply equation 2 by 2, so suppose this is equation 1 and this is equation 2. So multiply equation 2 by 2. I am writing same first so that you understand better. I am writing little bit apart from each other. You see very well that the same equation is written, x minus y/2 is equal to 1/2. I have to multiply equation 2 by 2. Why? Because the denominator is 2. So and that I am going to write it with the help of a red pen, that I have multiplied this with 2, multiplied this with also 2, and again this with also 2. So now you can see very clearly that I have multiplied equation 2 by 2. So we see here we can cancel this, here itself 2 gets cancelled, and here also 2 gets cancelled. Now here I am remaining with 2x minus y is equal to 1. This is equation number 3. So no need to take equation 2. I am going to take equation 1 and equation 3, and I am going to write it one upon the other. So now first equation is 2x plus 3y is equal to 2, and the third equation is 2x minus y is equal to 1. So this is equation 1 and this is equation 3. So now I am going to solve this two simultaneous equation by Cramer's rule. So once again I will let you know that equation 3 is nothing but equation 2. Some modifications I have done by multiplying by 2, and equation 2 becomes equation 3. We can see it here. So now we have to first find the determinant D, and you know D के लिए हमें क्या करना है, determinant D find करने के लिए same लेना है 2, 2, 3 and -1. तो 2, 2, 3 and -1. सॉल्विंग इट फर्दर, 2 ब्रैकेट आएंगे और उसके बीच में माइनस हो, देन 2 into -1 in first bracket, then 2 into 3 in second bracket, and then we can see that plus minus 2 1s are 2, this minus, and as it is 2 3s are 6. So now the answer of D, determinant D is minus becomes plus, minus plus करेंगे and put it on the bigger number. तो minus plus करेंगे तो 6 plus 2 is 8 and put it on the bigger number is -8. So we got the value of D is as 8, and then I am going to solve the value of determinant dx. So I know that dx के केस में आपको बताया था मैंने, आपको उल्टा लिखना है। ये वाला पार्ट जो है आपको पहले लिखना है, ये वाला पार्ट आपको बाद में लिखना है, और डिटरमिनेंट dx पता करने के लिए हम पहले x को छुपाएंगे एंड देन y के वैल्यू और कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 2 and 1,
and then 3 and minus 1, and then solving further, 2 brackets आएंगे separated by minus sign, 2 into minus 1 and then 3 into 1. So we can see that 2 into minus 1 is minus 2, minus 3 1 is 3, so minus minus plus करेंगे, प्लस करने के बाद कितना आया 5 आया, then put it on the bigger number, 3 का साइन है माइनस, सो माइनस करेंगे तो माइनस साइन डालेंगे तो नाउ द वैल्यू ऑफ dx इज -5. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट dy. डिटर्मिनेंट dy पता करने के लिए आपको y को छुपाना है, तो मैं रेड पेन से y को छुपा रहा हूँ. तो व्हाट आई कैन सी दैट 2 2 2 एंड 1. तो ये दो इक्वेशन हमने लिए थे 1 and 3. सो 2 2 2 and 1. सो आई एम राइटिंग इट हियर 2 2 2 and 1 एंड सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट. अगेन दो ब्रैकेट सेपरेटेड बाय माइनस साइन. ये माइनस साइन मैंने आपको कहा था फॉर्मूला से आया है, 2 into 1 and then 2 into 2. तो 2 1 is 2 minus 2 2 is 4. Then we get the answer as plus minus minus करेंगे तो 2 आया एंड पुट ऑन द बिगर नंबर 4. 4 का माइनस साइन यहाँ पर डालेंगे. सो डी वाई का वैल्यू हमें मिला है -2. तो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर d का वैल्यू मुझे मिला है -8 एंड dx का वैल्यू मुझे मिला है -5 एंड dy का वैल्यू मुझे मिला है -2. तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, dx का वैल्यू दिया रहेगा और d का वैल्यू दिया रहेगा फॉर 1 मार्क एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So now we know that by Cramer's rule we are going to solve this two simultaneous equation by Cramer's rule. So by Cramer's rule we can find the value of x if dx and d is given. तो आपको छोटा सा क्वेश्चन आएगा, मैंने अभी कहा था कि dx और d दिया रहेगा डायरेक्टली. सो वी हैव द फॉर्मूला x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये 1 मार्क के लिए होगा, पर अभी हम लोग ये पूरा सॉल्व करके हमने d का वैल्यू पता किया और dx का वैल्यू पता किया और dy का वैल्यू पता किया. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड एज वेल एज वैल्यू ऑफ y बाय Cramer's रूल. सो नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, dx वैल्यू इज -5 एंड d वैल्यू इज -8. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. आई एम कैंसिलिंग दिस साइन बाय रेड पेन, नो प्रॉब्लम, बट इन एग्जाम यू कैनॉट यूज रेड पेन. So please students remember this in mind. So the answer of x is 5/8. Now the value of y के लिए हमें कर लेना पड़ेगा dy अपॉन d. तो dy का वैल्यू है -2 अपॉन d का वैल्यू है -8. Again this by red pen, but you don't use red pen in your exam. Please student, please remember. Then I am cancelling, taking the table of 2 2 1s are 2 and 2 4s are 8. So now the answer is 1/4. So now I got the total answer as x is equal to 5/8 and y is equal to 1/4, which is the final answer of this given equation, linear equation in 2 variable. I hope so guys that you have understood this exercise. All the remaining sums you have to do it on your own so that you get confident and ready for the test. Thanks guys. Once again I would like to remind you that do subscribe this channel, do share, do like and comment so that other students also join our Unique Educare Prakash Paul sir's group, and while at home they can stay safe and they can practice exercise 1.3. Thank you guys.